श्रीभद्रकाळीकवचं नारद उवाच कवचं श्रोतुमिच्छामि तां च वेद्यां दशाक्षरीं नाथ त्वतो हि सर्वज्ञ भद्रकाल्याश्च साम्प्रतम्। नारायण उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि महाविद्यां दशाक्षरीं गोपनीयं च कवचं त्रिषु लोकेषु दुर्लभम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहेति च दशाक्षरीं दुर्वासा हि ददौ राज्ञी पुष्करे सूर्यपर्वणि। दशलक्षजपेनैव मन्त्रसिद्धिः कृता पुरा पञ्चलक्षजपेनैव पठन् कवचमुत्तमम्। बभूव सिद्धकवचोऽप्ययोध्यामा जगामसः कृत्स्नां हि पृथिवीं जिज्ञे कवचस्य प्रसादतः। नारद उवाच श्रुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुर्लभा अधुना श्रोतुमिच्छामि कवचं ब्रूहि मे प्रभो। नारायण उवाच शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन यद्दत्तं कृपया शूलिने पुरा त्रिपुरस्य वधे घोरे शिवस्य विजयाय च तदेव शूलिना दत्तं पुरा दुर्वाससे मुने। दुर्वाससा च यद्दत्तं सुचन्द्राय महात्मने अतिगुह्यतरं तत्त्वं सर्वमन्त्रौघविग्रहम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा मे पातु मस्तकम् क्लीं कपालं सदा पातु ह्रीं ह्रीं ह्रीमिति लोचने। ॐ ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा नासिका मे सदावतु क्लीं कालिके रक्ष रक्ष स्वाहा।